Hello everyone, my name is Aditya and in this video I am going to tell you the tips that you have to follow in your daily life. I will tell you 3 tips, only 3 tips. If you will follow these 3 tips, believe me guys, you will be able to speak, you will be able to be fluent in English language. That these tips I also used to follow when I started learning English. When I was beginner, I used to follow these tips. I found these tips beneficial, so because of this reason I'm going to tell you. So without wasting our time, let's get started. Hello everyone. So these 3 tips I'm going to tell you, you have to follow in your day and you will be amazed that I am also able to speak good English in just 1 month. And believe me guys, if you will follow these tips, तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे, बहुत ही जल्दी. I started this channel because I learned English. I have been learning for 1.5 years and I have improved my English and I am able to speak fluent English. So for that, what tips I used to follow, what the tricks that I used to follow, I know, and I want to tell you, those guys who come from village areas, who come from Hindi medium background, they don't know how to speak. So I will tell you in my channel. So please subscribe करना मेरे channel को. Please subscribe my channel, for especially for those people who come from a very humble background. This channel will be very beneficial for. Okay. So without wasting our time, I'm going to tell you 3 tips. Number one tip is that if you are beginner, you just have to follow Sartaj sir classes. Sartaj sir classes I used to follow when I started learning English, and he is a very good teacher. The teacher name is Sartaj. Sartaj sir classes, the channel is very beneficial for those who are beginner. Believe me guys, sorry guys, and आपको follow करना है सरताज sir classes in starting, and you have to learn daily 10 sentences which you can use in your daily life. You just have to learn, like for example, I'm going to give you some examples. जैसे कि आपको कहना है कि क्या मुझे एक गिलास वाटर ला सकते हैं, तो आपको कहना है कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या मुझे आप एक गिलास वाटर ला सकते हैं. जैसे कि क्या आप एक कप टी लेंगे. वुड यू लाइक टू टेक अ कप कॉफ़ी और टी. तो आप ऐसे बोल सकते हैं. ये सेंटेंसेस जैसे कि डेली आपको 10 सेंटेंसेस लर्न करने हैं. यू जस्ट हैव टू लर्न 10 sentences every day and you have to use in your daily life. You don't just have to put in your mind it, otherwise it will not be beneficial for you if you are only putting in your mind and you are not using those sentences in your daily life. So no, this is not going to be helpful for you. Please don't do this. You have to learn those sentences and you have to use come what may. You just have to use in front of your friend. You can speak with your friend. I know they will make fun of you, but it doesn't matter for you because you have to learn and you are seeing yourself as a good English speaker. If you are seeing yourself as a good English speaker, so neglect these things. You just have to speak. You just have to use these sentences. आपको 10 sentences every day लर्न करने, कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में 10 sentences आपको लर्न करने हैं डेली यूज़ के. और सरताज सर क्लासेस के लिए बहुत ही बेहतर मतलब इंस्टीट्यूशन है. बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझाते हैं. आप बिगनर हैं कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं. आप लर्न करो और यूज़ करो. ओके. एंड नंबर 2, दैट इज़ यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. यदि आपकी कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, प्लीज़ इंग्लिश लैंग्वेज से आपको सराउंड होना पड़ेगा इन स्टार्टिंग में. यू जस्ट हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. आई नो इन स्टार्टिंग यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, सो मैनी प्रॉब्लम्स. प्लीज़ यू जस्ट हैव टू स्पीक एज मच एज यू कैन स्पीक. जितना आप बोल सकते हैं. टूटी फूटी कोई बात नहीं. आई ऑल्सो यूज टू स्पीक टूटी फूटी इंग्लिश लैंग्वेज.
तो आपको बोलना है, आपको सेम खोनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो आपको बोलना है ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। और सेकेंड थिंग इसी में, you just have to surround yourself only in English language. You have to follow some channels who is मतलब जो इंग्लिश में अवेलेबल, जैसे कि आपको डेली एक स्पीच का वीडियो देखना है जो इंग्लिश में अवेलेबल हो। और इसका एक चैनल है, मुझे चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, I don't remember the channel name, but you have to follow at least a speech every day. आपको सुननी पड़ेगी। एक बहुत ही अच्छा चैनल है, उसमें जो एक्टर्स हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज who are giving their speech in that channel. If you will follow this channel, आपको एवरीडे एक वीडियो तो सुनना ही है, ठीक है। और आप जो भी हिंदी में देखा करते थे, आप हिंदी में सॉन्ग सुना करते थे, वो आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ठीक है। आपको इंग्लिश में सॉन्ग सुनना है, इंग्लिश में कोई मूवी डब्ड है तो वो ही देखनी है, आपको इंग्लिश में स्पीच सुनना है, आपको इंग्लिश से सराउंड होना पड़ेगा। दिस इज़ द कंडीशन फॉर लर्निंग इंग्लिश, राइट। और आपको इंजॉयबल कुछ चाहिए तो आप देख सकते हैं अमेरिकाज गॉट टैलेंट। America's Got Talent show is very helpful for English learner. They use because they are English man and they use very good language. If you are beginner, please follow that show and you will feeling enjoyable, and you with the enjoy you will be able to learn English easily. And number 3 guys, नंबर 3, आपको क्या करना है, इफ़ यू आर गोइंग टू द बेड, बिफोर गोइंग टू द बेड यू हैव टू राइट एटलीस्ट 1 or 2 pages about yourself, whatever you have done in your day, in starting from morning to night. You just have to put down in your diary, otherwise आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। और ये it will also be beneficial for your speaking. If you will write at least 1 or 2 pages, it will cover up your day, whatever you have done. You are just going through, right? तो आपको 1 or 2 पेज लिखनी है before going to the bed. Please do it. एंड इससे आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी, आपकी जो डेली लाइफ का जो आपका दिन है वो कैसे गया, it will also be beneficial for your day. Whatever you have done, you will have an account for your day, right? So these 3 tips you have to follow in your day. If you will follow, please believe me guys, I assure you that you will be able to learn English very easily, and you will be 10 times faster than those who are improving their English without using these 3 tips. Guys, आपको बस 3 tips यूज़ करनी पड़ेगी। ये 3 tips यूज़ कर लेना प्लीज़। आप कहीं से भी आते हैं, आप सिटी एरिया से आते हैं, आप ग्राम एरिया से आते हैं, गांव एरिया से आते हैं, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से, कहीं से भी आते हैं, it doesn't matter. If you will follow these 3 tips, you will be able to learn and be fluent in English language. And this is just a language, not a subject. If you have to take it as a language, and it is very enjoyable to learn any language guys, and English is very easy language than other language guys, okay? So if you find this video helpful, please subscribe to my channel, and I will be uploading these kinds of content on my videos guys, on my channel, because I started only for those who want to learn English, who want to improve, and who are beginner. I will assure you that if you will follow this channel, you will find the channel very helpful for learning English guys. So subscribe to my channel. Have a good day. We will meet in another video. Bye bye.